Good morning, everyone. Welcome to the morning con call. We start with technical and derivatives outlook. So yesterday we saw that Nifty has seen a very strong recovery. It was up by 158 points, and Nifty has almost closed at 18,053 level. So this is a very strong sign that Nifty, the way it recovered, and when during the day when there was sell-off in the mid-session, Nifty never corrected during the day, and it was trading very strongly on the higher side. So during the day, FMCG, realty, and oil and gas, these were the sectors which were in the positive, whereas we saw some decline in the PSU banks and fall in the media stocks. So net, what I believe, looking at the chart pattern, the Nifty is very strong, and the way it's a bullish candle close above 18,100. I think we should be seeing a short covering in the Nifty, and this should trigger the Nifty on the upside towards 18,300, 18,600 gradually. So this can also be a part of the pre-budget rally, which we are talking over the last couple of days. So the bias for the Nifty is positive. Supports do come at 17,800 levels. If those levels are broken, then we'll be cautious. And the sectors which which can contribute to this specifically IT, cement, and defense. In IT, we are liking TCS and HCL Tech. Cement, we can keep a watch on ACC and Shree Cement. They are coming. They are trading close to the support level. So there is a bounce expected. And even your defense counters the stocks like um, uh, HAL HAL is looking positive. So coming to Bank Nifty, the Bank Nifty yesterday remained flat. It didn't. There was a less of a momentum in the Bank Nifty. Basically, the PSU banks saw some selling pressure, but then vice versa, the private banks maintained the balance in the Bank Nifty. So in the private banks, Axis and then HDFC Bank are looking positive. So overall, even the financial sector financial services is looking positive. The stocks like Axis, HDFC Bank, HDFC Life, HDFC Limited, ICC Pru, and SBI Life. These are the counters which are looking positive on charts. So we maintain a positive bias in this counter. Whereas there are few stocks like Apollo Hospital, Bharti Airtel, Britannia, Asia Motors. These stocks are trading near the 200-day moving average, which is near to the support level. So we are expecting some bounce in this counter. So bias for the overall market is bullish. So we should be witnessing a short covering in the Nifty. This is what we sense. Coming to derivatives data, derivatives yesterday we saw a short covering to the tune of 1%, which is an addition of 13.54 lakh shares. The good thing was in the PCR, the PCR CS saw a significant rise from 0.8%, 8 to 1.16. So that is a very strong indication of strength. The major additions were seen in the 17,900 and 17,800 put option. So that should be a support. While on the call front, 18,200 and 18,500 call option has seen a significant build up in open interest. So that will act as a resistance. In Bank Nifty also, short covering was seen to the tune of 2.71%, which was the addition of 25.02 lakh shares. The PCR data was slightly improved from 0.72 to 0.81. That also add to this trend. The major additions were seen in the 42,000 put option at 36.36 million shares, and then at the resistance zone, 42,500 call option, 32.42 million shares. Lastly, the FI data. The FI in index futures added long positions close to 16,000 contracts, and then net position is minus 16,000 contracts. The long short ratio has improved till 44%. So we'll keep a watch on it. So whenever the data improves above 50%, then the FIs will be aggressively on the buy side. So that's all from my end, and hand over to Archana Madam for more research updates. Thank you. Thank you, Brijesh. Good morning, team. Few updates from my side, starting with Newgen. The company has reported a healthy set of numbers. So, the Q4 to be surpassed Q3 by at least 20% growth. The company is confident of achieving 20% growth in FY24 as well, and has guided EBITDA margin of 22 to 23% and net margin of 17 to 18%. Hence, we remain positive on the company and we have revised target price to 480 rupees. We suggest to
keep holding the stock for decent gains going forward. On Tata Metallics, the Tata Group company has reported profit of 9.5 crore for December FY23 quarter, which has fallen by 74% YOY, dented by the weak operating performance. Input cost and finance cost hit the bottom line. However, the revenue from operations has grown by 14% YOY to 790 crores. On ICICI Lombard General Insurance Company, the company has reported 11% YOY growth in profit at rupees 352 crore, while the premium earned at rupees 3,792 crore for the quarter grew by 14.5% YOY, and the total income grew by 13% to 4,362 crores in Q3 FY23. On Shalbai, the multi-specialty hospitals operator has clocked 17% YOY decline in consolidated profit at 15 crore for quarter ended December FY23, with muted top-line growth and the weak operating performance. Revenue from operations grew by 0.3% to 202 crores compared to the corresponding period last year. On EIDBI, the new 120 KLPD distillery of the company at Sugar Unit Sankli in Andhra Pradesh has commenced commercial operations. The said sugar unit has the flexibility to operate with multiple feedstocks, molasses, cane sugar, cane juice, and syrup, and grain-based. So that is a positive development on the company's front, and the stock may react positively on the news. On ITC, the company will acquire 100% stake of Sprout Life Foods for a cash consideration. Initially, for rupees 255 crore will be invested to acquire 47.5% stake till March 2025. On Adani Enterprises, Ashok Leyland, the company has signed an agreement with Ashok Leyland and Canada's Ballard Power for a pilot project to develop and launch hydrogen fuel cell electric truck in 2023. We have hold rating on Ashok Leyland, the target price of 165. On Glenmark Pharma, the company will divest select brands and sub-brands from its dermatology segment for India and Nepal territories to Eric Auckland Healthcare for rupees 340 crores. And lastly, on Adani Transmission, the operational updates for Q3 FY23, the sales improved 4% YOY to 2,165 million units against 2,077 million units a year ago. The company has added 371 CKMS to operational network. Distribution loss improved to 5.34% in Q3 FY23 against 6.53% in same quarter last year. So that's it from my side. Now I request Vikash to take it from here. Thank you. Now to Vikash. Thank you, Archana ma'am. Good morning, everyone. Further news updates are Samvardhan Motherson International, Japan-based Sujit Corporation on Tuesday sold 2.35% stake in the company through a bulk deal for rupees 770 crore. Sujit Corp sold over 10.6 crore shares at rupees 73.11 a share. Reliance Jio Infocom has launched 5G wireless services in 16 cities across the country. With this, the total number of cities have access to Reliance Jio's 5G services has reached 134. Adani Transmission and REC, the company has entered into a share purchase agreement with REC Power Development and Consultancy Limited to acquire entire stake of WRSR Power Transmission Limited. Dishman Carbogen MX, the board of directors of the company has approved issuance of non-convertible debenture aggregating up to rupees 100 crore on a private placement basis. And lastly, Gokaldas Export, Goldman Sachs Asset Management International has marginally raised stake in the company to 5.003% from 4.985%. I'll hand over to Prabhakar sir for further updates. Good morning, team. Reliance Industries may hive off green hydrogen business to invade for 8 billion. This is reported by ET. Maruti has announced to recall total of 17,362 vehicle. This was previous case where they rectified between 8th December to 12th January. They replaced or rectified all the airbags where there was a problem free of cost. Landmark Cars revenue was higher by 41% for 9 months ended December.
year-on-year basis, 41% at 3,380 crores. They said luxury automobile dealing cars sales was up 44%. After sales, service, spares and others increased at 30% year-on-year basis. Glenmark Pharma will sell few of its select brands and sub-brands. These are tail brands from dermatology segment for India and Nepal only to a subsidy of Eris Life Science for rupees 340 crores. So Eris Life Science will be buying that. So Eris consolidated revenue, yesterday they announced a result also. Their consolidated revenue was higher by 27% at 423 crores. EBITDA margin was 32.4%. Profit after tax was flat at 100 crores. EPS for this quarter was 7.49 rupees. In a very interesting news, China population shrinks for the first time since 1960. After 62 years, the population has reduced in China, and China GDP also has gone down. So it was clocking about 8 to 10% or above. Now it is 3% in 2022, second lowest in last 50 years. ICICI Pru Life came with the results. The revenue was up higher by 78% at 17,535 crores. VNB, which is value of new business, it was higher by 23% at 1,710 crores. VNB margin also increased to 32% from 27.1%. But profit after tax was down by 29% at 221 crores. It is due to few provisioning which they have made and higher cost of acquisition which has impacted their profit. But revenue wise, the growth is very good. So I think their profit will increase over a period of time. So any correction would be an opportunity to buy in ICICI Pru Life. ICICI Lombard came with a result. Now revenue was higher by 13% at 4,362 crores. Gross direct premium was higher by 21% at 16,048 crores. Profit after tax higher by 11% at 352 crores. Not a great result, but I think in general insurance, this is one of the best play. Berger Paint India eyes 20,000 crores turnover in the next 5 to 6 years. Company is scouting for 40 to 50 acres plot in Orissa. This is what the management has said. Sundaram Fasteners company bagged a contract worth $250 million from a leading global automobile manufacturer to supply sub-assembly for its electric vehicle platform. Positive for Sundaram Fasteners. In auto ancillary, we are very positive on Sundaram Fasteners and Mahindra CIE. Mahindra CIE, we have already said it will become CIE India, which is a global company, and they are likely to sell their Germany unit and shift the operations totally to India, which is very positive for Mahindra CIE, which is trading at all-time high. Paytm Bank gets RBI not to operate as a Bharat Bill Payment Operating Unit. This is slightly positive for Paytm. Metro brand revenue was higher by 23.8%. EBITDA margin at 34.3% and profit after tax 11% higher. Somehow, the premium brand has done very well, but anything below 1,000, these have not done very good. But e-commerce, they have reported the highest ever quarter at 50 crores, a growth of 57%. TV18 came with the results. Revenue was higher by 13% at 1,768 crores. Profit after tax dropped by 95% at 19 crores. The result, the revenue wise, it has grown, but profit after tax, due to low ad revenue, it has been impacting them. But they have got few contract. They have got Olympic rights for 2024 and women IPL for 5 years contract they have got. I think it is a long-term positive. Bank of India came with a very good results.
They have a total branch of 5,139. Deposit was higher by 4.91% at 6,53,000 crores. Advance was higher by 16% at 5,07,000 crores. NIM was at 3.28%. Even their net interest income, that was higher by 64%. So that is where the biggest changes come. Even profit after tax was higher. Edelweiss NCD was subscribed 1.18 times, rising subscription of 470 crores. Gulshan Polyol, their revenue was higher by 13.3%. EBITDA margin at 7.2%. Profit after tax dropped by 37%. Not an interesting result. Even Delta Corp result came. Their profit after tax was higher by 20%. But both these stocks we don't track. But we think Bank of India yesterday PSU Bank corrected because of the note RBI is given. It is just a consultation note, and for implementation it will take at least 1.5 years. So I think any dip in PSU Bank would be an opportunity to buy. And ICICI Pru, after 1 or 2 days, the correction, if you buy, you get at a better price. So I think these are stocks to watch out for. We expect market to rally. So be with quality stocks and frontline stock. ITC is one more stock we need to look at. And if InvIT is coming in Reliance will be a stock to watch out for. With that, over to you, Kshitija. थैंक यू सर. गुड मॉर्निंग एवरीवन. अभी हम लोग ये कॉल को एक बार हिंदी में कर लेते हैं. तो फर्स्ट अपडेट है न्यूजन जो है कंपनी, उन्होंने नंबर्स रिपोर्ट किए, हेल्दी सेट ऑफ नंबर्स रिपोर्ट किए थे. कंपनी का जो एक्सपेक्ट क्वार्टर 4 है वो सरपास किया है क्वार्टर 3 से. वो 20% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है. कंपनी कॉन्फिडेंट है वो अचीव करेंगे 20% ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 24 में. और कंपनी ने एबिटा मार्जिन रिपोर्ट की गाइडेड दिया है 22 से लेकर 23%. नेट मार्जिन दिया है 17 से 18%. तो हमारा जो आउटलुक है पॉजिटिव है स्टॉक के ऊपर. और जो रिवाइज टारगेट प्राइस है वो 480 है लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम से. टाटा मेटालिक्स के नंबर्स आए थे. कंपनी ने रिपोर्ट किया है प्रॉफिट 9.48 करोड़ दिसंबर क्वार्टर में. और ईयर ऑन ईयर 74% का डिक्लाइन है क्योंकि उनका जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस वीक था उसके कारण. और उनकी जो इनपुट कॉस्ट और फाइनेंस कॉस्ट है वो हिट हुई थी बॉटम लाइन में. और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो ग्रो हुआ है 14.5% से ईयर ऑन ईयर 790.23 करोड़ क्वार्टर में रिपोर्ट किया है. देन ICICI के नंबर्स आए थे. इंश्योरेंस कंपनी ने रिपोर्ट किए 11% ग्रोथ. प्रॉफिट रिपोर्ट किया 352.53 करोड़ का. और प्रीमियम अर्न हुआ है 3,792 करोड़ का. और वो ग्रो हुआ है 14.5% से ईयर ऑन ईयर. टोटल इनकम ग्रो हुआ है 13.2% से और 4,362 करोड़ रिपोर्ट किया है. शालबाई जो मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है उन्होंने भी नंबर्स रिपोर्ट किए. 17% की ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन देखा गया है. और कंसोलिडेटेड प्रॉफिट रिपोर्ट किया 15.3 करोड़ का. और ये मल्टी न्यू टॉप लाइन ग्रोथ थी और वीक ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस के कारण रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ग्रो हुआ है हार्डली 0.3% से. सो रिपोर्ट किया है 202.5 करोड़. देन EID पैरी जो है उनके जो न्यू 120 KLPD डिस्टिलरी है शुगर यूनिट संकाला आंध्र प्रदेश में, उसका जो कमर्शियल ऑपरेशन है वो स्टार्ट हुआ है. कंपनी ने अपडेट दिया. और ये जो यूनिट होगा वो फ्लेक्सिबिलिटी ऑपरेट करेगा मल्टीपल फीड स्टॉक्स के साथ, मोलासिस, केन जूस, सिरप एंड गेन बेस के ऊपर. नेक्स्ट अपडेट है ITC कंपनी ने अक्वायर 100% स्टेक करने वाली है स्प्राउट लाइफ फूड्स में कैश कंसिडरेशन के लिए. और इनिशियली कंपनी 255 करोड़ इन्वेस्ट करेंगी और अक्वायर करेंगी 47.5% स्टेक टिल मार्च 2025 तक. देन अदानी इंटरप्राइज एंड अशोक लेलन है, उन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया है. कनाडाज ब्लड पावर है जो पायलट प्रोजेक्ट होगा जो डेवलप एंड लॉन्च करेंगे हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक टंग 2023 में. तो अशोक लेलन के लिए पॉजिटिव है. करंटली स्टॉक के ऊपर होल्ड रेटिंग है, जो टारगेट प्राइस है वो 165 है लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम से. क्लेनमार्क जो कंपनी है वो डाइवेस्ट करने वाली है सिलेक्ट ब्रांड्स एंड सब ब्रांच जो है डर्मेटोलॉजी सेगमेंट इंडिया एंड नेपाल टेरिटरीज में. इरोस
ओकनेट हेल्थ केयर के साथ, और जो उसकी वैल्यू है वो 340.48 करोड़ है। अदानी ट्रांसमिशन के नंबर्स आए थे, सेल्स इंप्रूव हुआ है 4% से ईयर ऑन ईयर 2165 मिलियन यूनिट्स है। जो लास्ट ईयर हम लोग कंपेयर करें तो वो 2077 मिलियन थे। कंपनी ने ऐड किया है 371 CKMS टू ऑपरेशनल नेटवर्क में, और डिस्ट्रीब्यूशन लॉस इंप्रूव हुआ है 5.34% से Q3 में। देन नेक्स्ट अपडेट है रिलायंस के ऊपर। रिलायंस के जो जियो इन्फोकॉम जो कंपनी है, उन्होंने 5G के जो सिटीज है वो 5G नंबर्स ऑफ सिटीज है वो इंक्रीज हुए हैं उनके, तो उन्होंने अभी न्यू सर्विसेज 16 कंट्रीज में अक्रॉस स्टार्ट की है। तो अभी टोटल नंबर ऑफ सिटीज है रिलायंस जियो के पास और 134 रीच हुआ है नंबर। द नेक्स्ट अपडेट है सैमवर्धन मदरसन इंटरनेशनल जापान बेस्ड म्यूजिक कॉर्पोरेशन कंपनी है, उन्होंने 2.35 स्टेक सेल किया है बल्क डील से। देन अदानी ट्रांसमिशन एंड आरईसी ने एक शेयर परचेस एग्रीमेंट साइन किया है, और जो आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड के साथ, जो अक्वायर करेंगे एंटायर स्टेक WRSP पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड के साथ। देन दुश्मन कार्बन एमिक्स जो कंपनी है उनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उन्होंने अप्रूवल दिया है NCD डिबेंचर्स के लिए, जो एग्रीगेटिंग अप टू 100 करोड़ होगा प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस से। और गोकुलदास एक्सपोर्ट है, गोल्डमैन सैक्स एसेट मैनेजमेंट इंटरनेशनल कंपनी है, वो मार्जिनली रेज करने वाली है स्टेक की कंपनी में 5.003%, जो पहले 4.9885% था। देन रिलायंस इंडस्ट्री है, वो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट में कुछ अराउंड 8 बिलियन इन्वेस्ट करने वाली है, 80 नाउ के अपडेट थे। देन मारुति की जो प्रीवियस केस थी कि उन्होंने जो व्हीकल्स मंगा लिए थे, तो 8 दिसंबर से लेके 12 जनवरी के बीच में जो उन्होंने रेक्टिफाई करके दिए एयर बैग्स फ्री ऑफ कॉस्ट में। देन चाइना का जो पॉपुलेशन है वो रिड्यूस हुआ है आफ्टर 1962 से, तो ये GDP भी उनका लॉकडाउन हुआ है, तो सेकंड लोएस्ट है लास्ट 15 इयर्स में। देन नंबर्स आए थे मेट्रो ब्रांड के रेवेन्यू जो है वो 23.8% से इंक्रीज हुआ है। EBITDA मार्जिन जो है कंपनी ने इंक्रीज किया 33.4% से। पैट भी हायर आया है 11% से। TV18 के भी नंबर्स आए थे, रेवेन्यू जो है वो 13% से इंक्रीज होकर 1768 करोड़ कंपनी ने रिपोर्ट किया है। पैट है वो 19 करोड़ का रिपोर्ट किया है। पैट थोड़ा मतलब रेवेन्यू में ग्रोथ देखी गई है, बट पैट डिक्लाइन आया है, तो ड्यू टू जो उनका एड रेवेन्यू था वो उसका इम्पैक्ट देखा गया है। बट इसके अलावा कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं, जो ओलंपिक का है 2024 का वो कॉन्ट्रैक्ट मिला है, और वुमेन IPL का नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए राइट्स मिला है, तो लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव है। देन ICICI प्रूडेंशियल के भी नंबर्स आए थे, कंपनी ने 29% की ईयर ऑन ईयर फॉल देखा गया स्टैंड अलोन प्रॉफिट में 220.60 करोड़ है, और नेट प्रीमियम इनकम ग्रो हुआ है 4.3% से, जो रिपोर्ट ईयर ऑन ईयर जो रिपोर्ट हुआ है 9464.5 करोड़। देन बैंक ऑफ इंडिया के भी नंबर्स आए थे, ओवरऑल कंपनी के ब्रांचेस है 5139, डिपॉजिट ग्रो हुआ है 4.91% से 6,53,000 करोड़ के अराउंड। नीम्स भी इंप्रूव हुआ है 3.28 कंपनी ने रिपोर्ट किया है। नेट इंटरेस्ट इनकम रिपोर्ट हायर आया है 64% से। पैट भी हायर आया है, तो अच्छे नंबर्स आए थे बैंक ऑफ इंडिया के। देन बजरपेंट है, वो कुछ अराउंड 20,000 करोड़ टर्नओवर नेक्स्ट 5 इयर्स में 5 to 6 इयर्स में करने वाली है, और कुछ वो एक प्लान भी सेटअप करने वाली है। नेक्स्ट अपडेट है सुंदरम फाइनेंस में, कंपनी को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है लीडिंग मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से, तो ये पॉजिटिव है। हम लोग ऑटो एंसिलरी सेगमेंट में महिंद्रा CI और सुंदरम फाइनेंस के ऊपर पॉजिटिव है, तो ये स्टॉक को आप वॉच आउट कर सकते हो। महिंद्रा CI अभी ट्रेडिंग कर रहा है ऑल टाइम हाई के इधर। एडलवाइज का जो NCD था वो 1.8 टाइम से हायर आया है, उसका जो सब्सक्रिप्शन था। देन डेल्टा क्रॉप के नंबर्स आए थे, पैट 20% से हायर है, बट हम लोग ये कंपनी ट्रैक नहीं करते। ओवरऑल कल PSU बैंक में हम लोगों ने करेक्शन देखा गया है, क्योंकि RBI ने एक कंसल्टेशन की नोट रिलीज की थी, और ये इम्प्लीमेंट होने के लिए 1.5 ईयर्स तो लगेंगे ही। तो अब जो PSU बैंक है वो करेक्शन मिलता है तो बाय ऑन डिक्लाइन की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से मार्केट में रैली आ सकती है, तो फ्रंटलाइन स्टॉक को आप वॉच आउट करना, और फ्रंटलाइन स्टॉक में ही
ट्रेड करना चाहिए। उसमें IT से एक स्टॉक है, उसको आप स्टॉक टू वॉच आउट कर सकते हो। सो दैट्स इट फ्रॉम आवर एंड, थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग द मॉर्निंग कॉन कॉल, हैव अ नाइस डे।